have done Unit 6 of English. Now we are going to start our grammar syllabus for term 2. That is chapter 8. Chapter 8, the simple present tense. The simple present tense. Now here tense means what? Tense यानी कि क्या? Tense means which indicates the time of action. Tense means जो indicate करे time of action, यानी कि when we have done that action yesterday, today or tomorrow, right? Tenses जो हमारे indicate करता है time of action कि हमने कब किया, कब, कल, आज या करने वाले हैं. It is tense. Usually there are three tenses. First is present, second is past, third is future. Present means today. In Hindi it is called वर्तमान काल, जो हम कर रहे हैं. Next is past tense. Past tense means yesterday, जो हम कर चुके हैं. Yesterday in past tense in Hindi we call भूतकाल. And third is future tense means tomorrow, means भविष्य काल, जो हम काम करने वाले हैं. So there are three tenses. That is present tense, next is past tense, and third one is our future tense. In your grade 3 syllabus now they actually present tense, past tense and future tense उनके भी types होते हैं, but in your grade 3 syllabus only simple present tense, present continuous tense and simple past tense are only included. Rest of the tenses you will learn in your next grades. Okay, so here present tense में आपके दो types दिए हुए हैं, that is simple present tense and present continuous tense. But for in chapter 8 the only simple present tense is included. Next present continuous tense will be continue in your next chapter. Okay, now there are three tenses, right? Present, past, future. Present means it tells about what is happening currently. It means जो अभी हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है. It means any action or any work is there which is going on, which is going now. It is present. Okay, next is past. Here past means what has already happened. Already happened means जो काम हो चुका है, जो हम कर चुके हैं. It is past. Okay, next is future. What will happen later in future, जो होने वाला है. Like आपकी एग्जाम्स होंगी, आप घूमने जाएंगे. It means in future, जो हम करने वाले हैं. It is includes in future. Okay, now we will start with simple present tense. For simple present tense, अब आपको पता कैसे चलेगा simple present tense कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? For that I am going to tell you its definition of simple present tense. Here, what is simple present tense? How you will come to know then it is called simple present tense? How you will recognize it and when it is usable? Simple present tense को आपको पता कैसे चलेगा, ये recognize कैसे करेंगे simple present tense है? For that you should be aware that simple present tense is used for, it is used to describe a habit. It means आपकी जो डेली की हैबिट है, it जब आपकी कोई हैबिट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. नेक्स्ट इज what happens every day. What happens every day means डेली आप कौन सी बातें करते हैं. लाइक हैबिट होगी आपकी ट्यूशन पे जाने की, खेलने की. फॉर
for that, and a general truth. यहाँ पे general truth means which a universal fact जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना कि आप ना कि मैं. A fact is the sun rises in the east. जो सन राइज होता है ईस्ट से वो वैसा ही रहने वाला है, वो ईस्ट डायरेक्शन से ही राइज होगा. उसको हम नॉर्थ से नहीं कर सकते या साउथ से नहीं कर सकते. सो देयर इज नो चेंजेस इन द एनीथिंग. इट इज अ जनरल ट्रूथ. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूजिंग फॉर कोई हैबिट को, कोई जैसे कि व्हाट हैपेंस एवरी डे जो हमारा डेली का काम है उसको, या फिर जनरल ट्रूथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. नाउ हियर इन टेंस वर्ब प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. फॉर टेंसेस यू शुड बी अवेयर अबाउट वर्ब. नाउ व्हाट इज वर्ब? अब वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स आवर एक्शन. जो हमारी एक्शन को डिस्क्राइब करे उसे हम वर्ब कहते हैं. जैसे कि अभी मैं अगर लिख यहाँ पे राइट कर रही हूँ, इट मीन्स राइट. राइट क्या हो जाएगा? वर्ब. अगर आप अभी अपने घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो उसको क्या हो जाएगा? स्टडीज. तो स्टडी क्या हो जाएगा? इट्स अ वर्ब, राइट. फॉर टेंस, फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब इज अ मेन थिंग. नाउ देयर इज अ मेन थिंग हाउ यू विल यूज द वर्ब. आप वर्ब को कैसे यूज करेंगे? There are two verbs. It means you have to use simple verb और verb के पीछे ses ऐड हो जाएगा. यहाँ हमको सिर्फ simple verb यूज करना है. For that I am going to show you the table. According to that table, it will be easy for you that where you have to add ses in the verb or there is no need to add ses in the verb. Okay. Here I told you that according to this table it will be easy for you that you have to add s or es in verb or not, right? Now first of all I will explain you this table. In this table, see, first is person, singular, plural. It means in first person. Now you will think what is person? मैंने यहाँ पे person क्यों लिखा है? Now here person means when I am talking about myself, जब मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ. So what I will use I. अगर हमको अगर खुद के लिए कुछ बताना होता है, अगर कोई गर्ल को बताना हो कि मैं गर्ल हूँ तो आप क्या बताएंगे? I am a girl. बॉय को क्या ऐसे डिस्क्राइब करेंगे? I am a boy. It means when I am talking about myself, जब मैं खुद के बारे में बात करूँगी, so what I will use? I. In first person singular is I. In first person singular is I. In first person फिर plural क्या हो जाएगा? It will be we. W-E-V. अगर हम सबकी बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा? W-E-V. Right. Now next is person second. Here person second means when I am talking about you. मैं आपके बारे में बात करूँ तो आपको क्या बोलूँगी? मैं you बोलूँगी ना, right? In singular it's you. In plural also it will be remain same. Okay. जो singular में you है वही plural में रहेगा Y-O-U. Now next is person third. In third person singular. Now you will think about third person. Third person means when you and me we are talking about someone else. जब आप और मैं किसी और के पर्सन के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन. If I am talking about any boy, so he will be used. If I am talking about any girl, so she will be used. If I am talking about any another thing, कोई thing के बारे में, कोई animal के बारे में बात कर रही हूँ, so we will use it. Okay. अब जब हम किसी और के बारे में, बहुत सारे हैं, जैसे कि आप 3 ग्रेड के बच्चे हैं, अगर मैं ग्रेड 4 के बच्चों के बारे में बात करूं तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करूंगी? मैं THEY, they. ठीक है. अगर हम दो आपस में किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? THEY, they. Done. Now here how you will know where we have to add s and es? Now if we are taking example for P N A Y, play. This is the verb. I am giving you example with word play. मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमको प्ले यूज करना है या प्ले
by showing this table, right? In first person singular is I, तो हम I के साथ क्या यूज करने वाले हैं? PLAY. We will use PLAY play. If we are using for first person we, तो we के साथ भी क्या यूज होगा? PLAY play. इसमें s या es ऐड होने वाला नहीं है, इट विल रिमेन सेम एज, ओके, वो सिंपल ही वर्ब रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन इज सिंगुलर. इन यू वी विल यूज सिंपल ओनली, दैट इज PLAY play. We will use simple verb PLAY play without s and es. Next is here also you. So here also we will use simple verb PLAY play. Now here is the third person. Here is the third person, that means he, she, it. If I am talking about any boy, so I will use his name or else I will use he. तो जब he, she, it होगा उसके लिए we will use PLAYS. yes, यहाँ पे s होगा. इन सिंगुलर he, she, it के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली विल वी यूज प्ले, वी विल यूज प्लेस. PLAYS प्लेस. इन थर्ड पर्सन प्लूरल we will use play in a simple form. It means, in short, you have to remind only two things for he, she, it. Only for these three words we will use SES. SES वाला verb use करेंगे. It means SES only, उसके जो verb होगा उसके पीछे SES add हो जाएगा. And rest of the words means I, you, we, they. For these four words we will use simple verb without adding s or es, right? Now I am going to give you next example. Here I have given you for example play. Now next word is write. We are taking WRITE, write. Table I have shown you that where we are going to add s, es, or where there is no need to add s or es. Now this is the example. See again, we use the s form of the simple present tense. Means हम verb में s कहाँ ऐड करने वाले हैं? It means for he, she and it or a singular noun. Means when we are having verb के आगे जब he, she या it होगा या फिर singular noun होगा, we are going to use the s form of the simple present tense. Here are the some examples, which is Ravi cycles to school. Here I have added, see, I have added s here. Why? Because Ravi is the singular person. Ravi सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसलिए मैंने cycles में मैंने यहाँ पे s ऐड किया है. Next is Arya goes to Loreto College. Arya goes to, यहाँ पे go में मैंने es क्यों ऐड किया है? Why have added es here? Because Arya is here. Arya is singular, right? Arya एक ही है. That's why I have added here es. Next is the eagle flies high in the sky. Eagle fly करती है high. So I have added ies. Why? Because here only single eagle is there. एक ही eagle है. That's why I have added es. Right? Now there is the turn for the without s. Es कहाँ पे use होगा? Now I am going to show you that examples. Right? See now. First was the example for where we have to add s in the verb. Now this is the example for where there is no need to add s. See, we use the base form of the verb. Means as simple verb is given to us. जैसा verb दिया हुआ है, like dance, write, sing, read, fly. ये सारे examples कैसे? Simple form of verb without adding s. s हमने जहाँ पे ऐड नहीं करना है, राइट? फॉर कब नहीं ऐड करना है? फॉर आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स. जब वर्ड स्टार्ट कहाँ से होगा?
cycle to school. Here I have not added s. This is the verb. Here I have not added s because here this is the word they, and they is used in plural form. They means बहुत सारे, वो plural है, that's why I have not added s here. Next is I walk fast. I walk fast. तो I के साथ भी s नहीं आता है, that's why I have written it walk in the simple form. Third, we swim in the pond. Here also s is not added because this is the first word is we. We means बहुत, हम सब. We means हम सब एक से ज़्यादा है. It means it is a plural form. That's why I have not added s or es here. Right. Next is you. You write very neatly. अब you कैसा है? You भी plural में आता है. That's why I have not added s here, and I have written it in the simple form of verb. You write very neatly. Right. Now, in this simple present tense first topic, you have to remind only two things which I have told you earlier also, that in plural forms there is no need to add s or es in the verb, and in singular it means for he, she and it. There is a need to add s and es in the verb. In this simple manner you will learn it easily. Just go through once with this video. If you are having any query or doubt, I am going to solve these queries in your live session. Thank you. Have a nice day.